Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Lisa Johar, and I wish you all a very happy new year. And I hope that this year brings a lot of happiness and prosperity in your life. Uh, Also, there's a lot of cold in Delhi. It's being literally very difficult for me to make videos क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा नेचुरल लाइट चाहिए होता है विंडो के पास और बाकी किसी भी जगह पे वीडियो ब्लर बनती है इट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी सो मुझे फिर नहीं लगता अच्छा कि मैं कहीं और शूट करूँ तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो नेचुरल लाइट मिले ताकि मैं थोड़ी अच्छी वीडियो शूट कर पाऊँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट एस्थेटिक बैकग्राउंड so at least a good lighting can help me to make good quality videos and that's why I wasn't able to make videos also. um, I thought कि जब मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट की ही है if I have started then I should stay committed to it. I should not make excuses and that's why I was like okay whatever. It's literally being difficult to stay consistent but I'm trying my best. बहुत ज़्यादा बकबक करने के बाद अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं so basically what's the point of making this video. As you all know that I was scrolling YouTube and I was seeing like everyone is making vision board and everyone is making resolutions. So I was like, okay, I think I should also बिकॉज़ मैंने भी मतलब अब मैंने भी मैं बनाती थी पहले भी ऐसा नहीं है, 1-2 रेज़ोल्यूशन तो बनाते ही थे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब पे भी शेयर करें लाइक व्हाट रियली वी आर थिंकिंग टू डू इन दिस न्यू ईयर एंड एडिशनली आई फेल्ट कि यार अगर जैसे कि अब वी आर फैमिली ऑफ 160 पीपल तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल टू रिमाइंड मी अगर मैं कोई रूल भूल रही होंगी या फिर मैं अपना कोई रेजोल्यूशन भूल रही होंगी राइट. सो आई होप यू गेटिंग द आइडिया राइट. So that's why I was like, okay, fine, let's make a video and let's share uh, the resolution of 2025. So let's start it. पहली बात तो ये कि आई एम जस्ट सीइंग मैनी पीपल लाइक वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक से गोल्स सेट कर रहे हैं अपने लिए. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई एम being very honest here. Like I have made three rules, you can say, like for myself. And of course the very first one is like everyone in this world wants ki we all want to become better every year, right? So that's exactly the point of first rule. I want to become a better version. मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही एकदम इट गर्ल बन जाऊँगी, एकदम कभी खुशी कभी गम वाली पू बन जाऊँगी. नो, दैट्स नॉट द आइडिया, दैट्स नॉट द आइडिया इन माई माइंड. आई रियली वांट टू बिकम अ पर्सन जिसे देख के मैं कह सकूँ कि यार आई वांट टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. समझ रहे हो? मतलब जैसे लोग मेरे आइडल हैं लाइक आई रियली एडमायर प्रियंका चोपड़ा. आई रियली एडमायर मैनी अदर पीपल. नाम भी याद नहीं आ रहे कुछ लोगों के. तो वैसे जो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनके, मैं उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को ज़रूर अपने अंदर इनहेरिट तो नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं उन चीज़ को अडाप्ट करना चाहूँगी. यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? For example, I would like to improve my communication skills. Of course, like I know I have good communication skills, but still, like there's always room for improvement, right? So I would love to improve that thing of mine. And what else? Yeah, so basically, I want to become my better version this year, and I want to improve my YouTube videos, like the quality. I hope by the end of this year, by the end of 2025, I'll be making good quality videos. I'll be learning more about YouTube, about the algorithm, and पता नहीं बच्चे कितना शोर मचाते हैं मेरी गली के. I'm so sorry, just please ignore the background noise. I can't do anything about it. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन दिस ईयर. और मैं बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं कर रही हूँ बट एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ों में मैं अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखना चाहूँगी. एंड सेकेंडली द थिंग इज़ दैट
There's one thing I never speak about it with people, but I feel that sometimes I literally become a crybaby. Like, I don't know why, but I become a crybaby, and eventually I have learned this thing that it's not really good to be that kind of a person. I mean, why? Like, पता है मतलब मैं बहुत overthink करती हूँ. I just overthink a lot, and sometimes I really need that kind of a person in my life that who tells me like, okay, Lisa, fine, breathe. You need to breathe. You need to calm yourself, and just don't think too much. क्योंकि मैं इतना ओवरथिंक करती हूँ ना, कभी-कभी इतनी छोटी सी सिचुएशन होती है और उसको इतना बड़ा कर लेती हूँ दिमाग में। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे अगेंस्ट चली जाती है कुछ सिचुएशंस में, और दैट्स समथिंग आई रियली डोंट लाइक। तो कहीं न कहीं मैं उस ओवरथिंकिंग को ओवरकम करना चाहूँगी, एंड आई वांट टू डेवलप थिक स्किन सो दैट आई डोंट गेट सैड और मैड एट अदर्स एक्शन। मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई जस्ट वांट टू बी लिटिल बिट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एकदम रेवोल्यूशनाइज़ हो जाऊँगी, एकदम चेंज, कोई भी नहीं हो सकता, है ना? You also need to know that you are a human, and these gradual changes comes over a span of time. They don't come overnight to you. So you need to learn that thing, and it will be gradual. You have to be patient. So I would really like to overcome my overthinking. This is the second thing. And of course, इस क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी मैं क्राई बेबी बन जाती हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ओवरकम करना है. सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज आई हैव टू लर्न लॉट ऑफ पेशेंस. I'm not saying I'm impatient. I'm not impatient, but sometimes in some situations मुझे बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है. मतलब एवरीथिंग जो भी लाइफ में हो रहा है उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यूज टू हूँ शायद वो एग्ज़ाम्स पैटर्न के जो स्कूल में होते थे कि यू गिव एग्ज़ाम, अगले हफ्ते तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड यू विल नो आपने कितना स्कोर किया है. बट दैट डजेंट हैपन इन रियल लाइफ. यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन थिंग्स, एंड वेट भी आपको कितना लंबा करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी अनसर्टेन. Nobody can tell you. So I just came to know about this thing little late, but life teaches you, life gives you right lessons at right time. So I am really looking forward to learn these new lessons which 2025 will bring in my life, and I'm really grateful for the people who have been there for me, and for my friends as well, like my family, my mom, dad, um, every person, every relative, every friend who just stick to my side, and they were like there whenever I needed them. So I am really grateful for that, and really feel blessed that okay, I have got some people who are there to remind me that who I am. But still, this is the thing that something I want to learn as well again in 2025, that I want to explore my potential. Like, I think that being a 19-year-old, you really don't know about a lot of things in life. So, just settling for things which are coming in your way is not right. I mean, I don't know if it's right or not, but everybody has different aspirations, everybody has different potential, and I feel potential of everyone is limitless. Like, there are no boundaries. You can explore as much as you can. You can literally, there's so much that life gives you, but if you're not really taking advantage of it, then it will go waste. So I really want to take advantage of the opportunities life will bring in my life, and I want to leave a message for Lisa in this video for my own self, that I don't know. You when you look back at this video, maybe by the end of 2025, or maybe in beginning of 2026, you'll be very proud of yourself, because I know that you'll be very proud,
and you will be the person who who will who might have gained a lot of things, might have not gained a lot of things, a lot of experiences, and that will help you to grow. And I really hope that you accomplish everything you want in this 2025. And I hope everyone who are making goals for themselves, apart from me, who are setting goals for themselves, I hope you accomplish everything you all want. And this that's it about this video. I don't want to set some very different, or maybe some, what's the word, I always forget things. I don't know why it happens. I don't know, it's not coming in my mind, so I'm not going to talk about it. But yeah, I have idea like what I really am expecting from this year, and I hope God helps me to do all of those things that I'm wishing to do in this year. And with this positive note, I would like to end this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, then please like my video, subscribe to my channel, and for more such content, please subscribe my channel, please share my videos, and I again, once again, wish you a very happy new year. Thank you for, oh, and once again, I wish you a very happy new year. Thanks for watching. Bye bye.